Hare Krishna, Tejal ji. Thank you for asking these questions. If someone calls Govardhan Leela, Damodar Leela and other pastimes of Lord as mythology, then what to say? What can you say? I'm sorry. You'll have to understand first thing that before understanding Damodar Leela, Govardhan Leela, pastimes of the Lord, the first thing has to be cleared that you are not this body, you are the soul. Does the person believe that there is a creator? You have to explain to him about the soul, about the rebirth of the soul, how the research has been done in the Western world, which examples I have given in the Bhagavad Gita lecture series, which I think you have heard. So you have to take him stepwise, because a person in the village who has never seen a two-story building, double-story building, and if you go and tell him that there is a building which has got 80 floors, he would not believe you. He'll think you are a crazy man. You're telling him a story. It is myth what you're telling him. So, but then you have to explain to him how this is possible. So please don't try convincing him on this matter. Next thing is, you have asked, if someone asks, have you seen God? Then what to say? So you can tell him that, yes, I am in the process of seeing God. Like, in the first year of the MBBS, if someone asks the student, have you seen the heart? So he would say, yes, I am not seen the heart yet, but I know that a heart exists. It is stated in my books of medical science. And I am following the process by which one day I will also see the heart. In the same way, at this juncture, I have not seen God. But yes, I am in the process by which I can see God. So for seeing also, you have to be qualified. Like, if you want to see the bacteria or the virus which has caused the disease, you have to be qualified. So in that same way, you can very clearly answer that, yes, I am in the process, by which process I can see God. So this is a simple answer. Next question which you have put up is, if one is not able to dedicate his full lifetime, what are the things he must do on daily basis so that he will go back to Godhead at the end of his life? I would request you that please go through this 14-hour session again, and the last session which I give and tell you how you have to engage as a devotee 24 hours a day. Because without being 24 hours a day conscious of Krishna, you can actually not go back to Godhead. It is not possible. So, and for that, there is nothing called half time, quarter time, 3/4 time devotee. You are a devotee who is always engaged in the service of Krishna, or you are a person who is trying to become a devotee. So most of the people are trying to become devotees, and some have become devotees. So when you are trying to become a devotee also, at that particular point of time, you have to follow the process. And the process will lead you where you will be a full-time devotee. You may be in any place in the society, you may be anywhere in the world, and you can still be a full-time devotee. So this concept remove from your mind, that full-time devotee means that if he is going to live in the temple itself. No. Arjuna was not living in the temple, but still he was a full-time devotee. So that is a very stark example which is in front of us. Dhruv Maharaj was not living in the temple, but he was a full-time devotee. Amrish Maharaj was not living in the temple, but he was a full-time devotee. Yes, it is difficult because you have not been trained.
Because once you have been trained, then it becomes easy to practice. So, start your training. And for that, I'll again request you, go through that last day specifically, and then you have these questions, please put them up to me. Next, you have got, when someone asks a question like this, what to say, how to answer. I have tried to help you. They say, if you are so eager to go back to Godhead, why are you delaying it? Rather kill yourself and think about Krishna only and leave the material world once and for all. Why are you practicing bhakti yoga so much and waiting for death to come? I'm sorry. First of all, trying to kill yourself is the most heinous crime, heinous sin, most heinous. Krishna does not like it at all. He says, you engage yourself. You will not kill yourself. It is not allowed. So you are not following the instructions of Krishna. So how can you be called a devotee? Because if you commit suicide, you have not followed the instructions of Krishna. And a person who does not follow the instructions of Krishna is not a devotee. So how can you go back home, back to Godhead? You can't. So first thing. And the other thing, why are you practicing bhakti yoga so much? What do you mean by so much? I'm enjoying. Does anyone, when you are earning so much of money, does anyone tell you that why are you earning so much of money? No one. So, bhakti yoga is a process. If you are following it, you will be enjoying it every moment. You are not waiting for death that only I will enjoy after death. Sorry. A person who practices bhakti yoga and who is practicing bhakti yoga in reality will be enjoying every moment, and that's what Krishna says in the Gita. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Su sukham kartum avyayam. So the person who does it, kartum, who is doing bhakti, he is not getting sukham, he is not getting happiness, he is getting unlimited bliss. Unlimited bliss. So when I am enjoying this unlimited bliss, so what is the problem? And death is nothing for us, it is just change of body. I will be serving Krishna here also, and I will be serving Krishna after I leave my body also. So what is the problem? So let me serve here now also, and let me serve him after I leave this material body also. Because both the places I have to serve Krishna. So death is nothing for us. For a devotee, death is nothing. Death is for people who are afraid of, they do not know about spirituality, they do not know about bhakti. They are afraid of death. We are not afraid of death. Death is nothing for us. Death is just like changing clothes. I am working somewhere, and in the afternoon I change my clothes because today in the MNCs you will see these people come in the morning, and at 12:30 they'll go into the gym. They have got the gym in the office itself. Then they will go in the gym, they'll do some exercises, they will sweat, then they'll take bath there only. They got bathrooms there only. They'll take bath, they'll wear another set of clothes. Before this they were doing the work of the company, for the company. And after they have changed their clothes, then also they are doing service for the company. So what is the difference? So please understand these things. And these people who are so against, they do not know the basics. So please, don't worry. We are not delaying anything. You don't have to kill yourself. These are all wrong statements. Beware of such people. Thank you.
Hare Krishna, Deep Singh ji. Thank you for asking me this question. You have stated Srila Prabhupada recommends 50% donation by the Grihasthas, householders. I want to ask whether this 50% is on the net income or gross income. Because today government collects huge amount of tax in the form of TDS, income tax, education cess, surcharge, etc. If someone is earning 50,000 per month and is getting 40,000 in hand and 10,000 goes to government, what should be the 50%? 20,000 or 25,000? Don't worry, you give 20,000, that will be enough. Okay? So, thank you, Deep Singh ji. मीनू खरबंदा जी, हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आपने लिखा है, मैंने गायत्री वाली वीडियो क्लिप सुनी, उसमें मेरा एक क्वेश्चन है। कोई जब मरता है, हम उसके क्रिया पे जाते हैं, वहाँ पंडित लास्ट में गायत्री मंत्र बुलवाता है और जब हवन करते हैं तो पंडित गायत्री की आहुति दिलवाता है। आप जो गायत्री कह रहे हो उसमें और इसमें फ़र्क है क्या? आप मेरी शंका दूर कीजिए। देखिए मीनू जी, जो हम गायत्री कह रहे हैं और जो ये गायत्री कर रहे हैं वो एक ही है, और ये गलत कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। आपने सिर्फ एक क्लिप सुनी है। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारी 14 घंटे की भगवत गीता पे MP3 नहीं सुनी है या DVD नहीं देखी है तो उसको कृपा करके मंगवाइए और देखिए। गायत्री मंत्र करने के लिए व्यक्ति को पात्र होना अनिवार्य है, पात्र होना पड़ेगा उसको। यदि वो पात्र नहीं है तो उसको उसके विपरीत फल मिलेंगे। तो ये ब्राह्मण जानते ही नहीं ये क्या करा रहे हैं। अब अगर कोई गलत कर रहा है पिछले 200-500 साल से तो वो सही थोड़ी हो जाता है। जैसे समाज में शोषण आ गया है, अब ये सही थोड़ी है। कई लोग 100 साल से शोषण कर रहे हैं, परंतु शोषण करना तो गलत है। तो इसी तरीके से ये जो गायत्री कराते हैं ये बिल्कुल गलत है, नहीं करानी चाहिए। कलयुग के लिए और कलयुग में गायत्री करने वाले पात्र बहुत कम मिलेंगे। वो पात्रता पहले आपको पात्र बनना पड़ेगा। परंतु कलयुग के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, वेदों ने हमें बताया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको महामंत्र की संज्ञा दी गई है। इसे कोई भी कर सकता है, चाहे पात्र हो या ना हो। तो अब गलत कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इतना ही बता सकता हूं कि ये गलत कर रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। पंकज जी, you have asked me this question, need clarification on 33 crore demigods from Guruji. Is it correct or incorrect statement on 33 crore demigods? I didn't understand that. What do you mean by that? That clarification on. There are 33 main demigods, and then there are 33 crores also. But the major are 33. So don't go into this. They may be 33 crore or 33. We don't have to do anything with them. So why be bothered? If the American government has got 100 prime ministers or 20 ministers, what have I to do? Because I am an Indian citizen. I have to know that where my work will be done. I am a devotee of Krishna and I know that I can't satisfy all the 33 or 33 crore demigods. I can't satisfy them. Because every one of them have got a different way to be satisfied. So the Bhagavatam says that satisfy Krishna. The moment you satisfy Lord Shri Krishna, all these demigods are satisfied. So that is the best way. I hope this helps. Thank you for asking me this question. Thank you, Pankaj ji.
हाँ राहुल जी, आपने प्रश्न किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। देरी से उत्तर देने के लिए क्षमा कीजिएगा। आपने लिखा है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको भी बहुत बहुत हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आपने लिखा, मैंने 14 घंटे का प्रवचन सुना है जिसमें से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला, आपने कहा कि ओम का प्रयोग अंदर बाहर से शुद्ध होने पर किया जाना चाहिए, लेकिन आप शुरू में ओम नमो भगवते वासुदेव का 2-3 बार जप करवाते हो, तो ओम तो इसमें भी है। हाँ जी, बस इतनी बार बोलते हैं करने के लिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है कि शुरू तो करना ही पड़ेगा, परंतु इसको हम लगातार ओम 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 ये नहीं कर सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, और मंत्र में हम कुछ काटा छीटी नहीं कर सकते, परंतु इसका जप नहीं करते हम, ना इसका कीर्तन करते हैं, क्योंकि हम इसके लायक नहीं। तो 3 बार करना और 100 बार करने में फर्क है, समझे ना जी। वो कहते हैं ना, इस चीज पे 2 बार हथौड़ा मारना, ज्यादा मारोगे तो ये टूटकर बिखर जाएगी। इसीलिए 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना चाहिए शास्त्र पढ़ने से पहले, बस। इससे आगे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा, आपने कहा कि पूतना को नित्य गोलक वृंदावन प्राप्त हुआ क्योंकि वो कृष्ण के हाथों मारी गई थी। तो क्या तारका, रावण, खरदूषण आदि को भी नित्य साकेत अयोध्या धाम प्राप्त हुआ था जब वो राम के हाथों से मारे गए थे? शास्त्र जो हमने सुना है और पढ़ा है उसमें यह लिखा गया है कि सब जब वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन कृष्ण किसी को मारते हैं तभी उसको वैकुंठ प्राप्त होता है, और किसी और अवतार में जब कृष्ण भगवान मारते हैं तो उनको वैकुंठ की गति प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने जो बाहर भी किसी को मारा है उसको भी वैकुंठ प्राप्त नहीं हुआ। जब वो द्वारका गए तब भी उस व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरीके से राम अवतार में, विष्णु अवतारों में जब उन्होंने किसी का वध किया है तो उसको वैकुंठ प्राप्त नहीं होता। सिर्फ जब वृंदावन में व्रजेंद्र नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण जब मारते हैं तब उस व्यक्ति को गोलक धाम प्राप्त होता है। तीसरा, क्या हरे कृष्ण महामंत्र को कोई भी 4 संप्रदाय का जप सकता है? 4 संप्रदाय का क्या, कोई भी जप सकता है। जरूरी नहीं कि 4 संप्रदाय में होगा तो ही जपेगा, कोई भी जप सकता है, जो चाहे जप सकता है। हकीकत में सबको जपना चाहिए, क्योंकि कली संतरण उपनिषद के अनुसार कलयुग में इससे बड़ा और कोई तरीका नहीं है। आपका चौथा प्रश्न, जयपुर गलता जी में जो है क्या वो भी चारों संप्रदाय में से ही एक हैं? कृपा प्रश्न का उत्तर शीघ्र प्रदान करें, हरि बोल। पहली बात तो मैं देरी हो गई आपके प्रश्नों का उत्तर देने में, उसके लिए फिर से क्षमा चाहता हूं। देखिए, मुझे हकीकत में गलता जी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, परंतु जो मैंने ऐसी उड़ता हुआ सुना है कि हाँ वो भी संप्रदाय में से हैं, जो मैंने सुना है, परंतु इसके ऊपर मैं आपसे कोई ऑथेंटिक स्टेटमेंट नहीं बोल सकता, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे इतनी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तेजल जी, यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, हरे कृष्णा, जय गौर हरि। Your question is, what is the difference between religion and spirituality? Thank you, Dandvat Pranam. आपको भी Dandvat Pranam. Very simple. A single line answer. Religion is a matter of faith. Spirituality is a matter of fact. Religion is based on faith. Spirituality is based on fact. Religion deals with what you think about your body and things connected with your body. Spirituality starts with the soul, and the soul
is a fact. Faith can change, but facts don't change. You may have faith in something today, and that faith can change tomorrow. But facts don't change. They remain. Religion is totally dependent on your faith, but spirituality depending upon upon the facts. If you don't have faith also, then also it remains. Whereas religion, if you don't have faith, you become an atheist. In spirituality, you may not believe, then also it was there, is there, and will remain there. It is not dependent on our faith. Like for example, examples don't explain everything very clearly, but they help us to understand things. Like the sun rises from the east. I don't believe. Does it matter if I believe or I don't believe? It's a matter of fact. It rises from the east and sets in the west. That's how a day, that is what we call a day. And when it sets, we call it in the night. So it does not change. It remains a fact. You may have faith in it or you don't have faith in it. So faith creates conflict. Facts don't create conflict. Faiths every time will create conflict because they are all based on your own individual self. But facts are not based on your individual self. That is why there will be no conflicts when you talk on spirituality. So today you are having all these problems because people are moving on the religious level, not on the spiritual level. Bhagavad Gita is a book of spirituality, not of faith. That is why it is not a book of only Hindus. It is a book for all humanity. It is a book for all the souls. And the souls are not based on faith. They are a fact. And their nature does not change. Consciousness is the energy of the soul, which is there in everyone. And people of different faiths also have same consciousness. So it does not change. But your faith can change. So be spiritual, not religious. Thank you. I hope this helps. Hare Krishna, Jai Gaurari. Rahul ji, you have asked me this question regarding the Srimad Devi Bhagavad Puran. My only question is this, that when you because all spirituality talks of one thing, that you should get out of this material world. So I ask you, after you get out of the material world, where do you go? What does the Devi Bhagavad Puran say? It does not talk anything after liberation. And for your knowledge, Puranas, different Puranas establish different faiths according to your modes, guna, satogun, rajogun, tamogun. So my request to you, please check up. What is it talking about liberation? Not of who's great and who's not great. So, Shakti, Adi Shakti. But how can there be Shakti without Shaktiman? It is Shaktiman who controls the Shakti. Shakti has got nothing to do. When Shakti has got no Shaktiman behind it, it is only destructive, never constructive. Because there is no intelligence which can guide the Shakti. So our only request to you is this, Rahul Chaube ji, that what happens after death? Where do you go? Where does Devi ji live? Because you'll have to go there, na? What is it stated? You'll get the answer.
Thank you. Hare Krishna. Dear Nageshwar ji, Jai Gaur Hari, Hare Krishna. Thank you for asking me these questions. I'll try to help you with the best of my ability. And with the mercy of my Guru Srila Prabhupada and their Lordship Shri Radha Krishna and Shri Gaur Nitai. You have stated I have come across Give Gita session on TV and I have purchased the DVD set and listened attentively to the entire set. Request you to clarify the following questions. First, I understand that I am a Jiva who is an Amsh of Bhagavan and Jiva is Anuchit Swarup. I am in this body enjoying and so is Paramatma who is watching Jiva. You have explained how we should contemplate Paramatma by citing example of a judge. Please clarify how I should contemplate other names that we come across in Gita, Ishwar and Chetana that are inside this body. As Paramatma, Krishna is residing with this soul in this material world. Paramatma is known by its qualities, what it does. In the same way, Ishwar means controller. So, Ishwar means controller. So, he is the controller. Who is the controller? Krishna. Lord Shri Krishna is the controller. And Chetana? Chetana is not God. There are two Chetanas. Chetana means consciousness. One is the consciousness of the soul and the other is the consciousness of the super soul, that is the Paramatma. One is Anu. Anu is the soul. It is conscious of only certain things. Whereas the Paramatma, which is Vibhu Chit, Vibhu Chetana, unlimited consciousness, that it is conscious of everything. So you don't have to contemplate on the Chetana. Ishwar is controller, that is Shri Krishna. Paramatma is again one of the features of Lord Shri Krishna, one of the avatars of Lord Shri Krishna. So you don't have to contemplate. Contemplate not on Paramatma, please. Contemplate on Lord Shri Krishna, Radha Krishna, Shri Gaur Nitai. Contemplate on them, not on the Paramatma. I have warned you. In my lectures, if you have gone through, I have warned you, please don't think of the Paramatma. Think of the Father, Lord Shri Krishna, who is all merciful. Paramatma is not showing mercy. It is a judge. He is acting like a judge. He can't show mercy. He has to be very unbiased. Mercy means bias. Paramatma is unbiased. So don't contemplate on the Paramatma, for God's sake. Contemplate on Shri Radha Krishna, Shri Gaur Nitai. Second question of yours, please clarify as to how should I contemplate on Narayan, Shri Hari, Vasudev, Purusha, Govinda, Venugopal, Venkateshwara. Whenever I see them in temples or come across their photos, very simple. Just think them as the different avatars of Lord Shri Krishna in different forms. My Lord Shri Krishna is in different forms. He is coming as Narayan, as Shri Hari, as Vasudev, as Purusha avatar, as Govinda, as Venugopal, as Venkateshwar, as Vishnu, as Narayan. These are all different forms of my Supreme Lord Shri Krishna. That is how you should contemplate on them. Third, why did Lord Krishna address Arjuna with different traits like Parantapa, Partha, Gudakesh, etc.? And does this have any relevance to understanding the shloka? Should I be really considering these while understanding Gita? I would request you initially, you can
Just read the Bhagavad Gita, try to understand on the basic level first. But all these names have had a meaning with the shloka where they have been stated. They have had a meaning, which I have discussed, which I'll sometimes again discuss in some of my classes, which you can understand that why this name has been referred specially with this shloka. But that is a deeper understanding. That's like going into Bhagavad Gita study graduation, post-graduation level. Please complete your 12th and graduation first, then we go into the post-graduation level. They'll help. But if you don't understand why they have been stated, does not mean your study of Bhagavad Gita is incomplete. Please understand one thing. The study of Bhagavad Gita is not incomplete. Because Bhagavad Gita is leading you to become a devotee of Lord Shri Krishna. Remember one thing. So if you're becoming a devotee of Lord Shri Krishna, that means you have understood the Bhagavad Gita. If you're not becoming a devotee of Lord Shri Krishna, then you are not understood Bhagavad Gita. Very simple. I hope this helps. Thank you, Nageshwar ji. हरे कृष्णा मोहित जी, जय गौर हरि। आपके प्रश्न हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। पहला प्रश्न है, मैं अपनी खोई हुई भक्ति के लिए बहुत परेशान हूँ और जब मैंने वृंदावन चंद्रदास जी की भगवद गीता वाली डीवीडी सुनी थी तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, लेकिन फिर दोबारा कुछ दिनों बाद मन अशांत होने लगा, जबकि पहले कुछ ऐसा नहीं होता था। एक बार सपने में चैतन्य महाप्रभु जी आए और उन्होंने खुद मेरे सर पर हाथ रख के कहा, बेटा भ्रमित मत हो और दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। लेकिन फिर भी मन कुछ दिनों बाद अशांत हो गया। अब आप ही रास्ता दिखाओ, मैं जयपुर आने में असमर्थ हूँ। दूसरा प्रश्न, वृंदावन चंद्र प्रभु जी, पिछले 3 सालों से मैं टीवी पर कथाएं सुन रहा हूँ और पहले जब कथा सुनता था तो कथा सुनने से मिलने वाला आनंद हर समय तन मन पर रहता था, लेकिन अब जब कथा सुनता हूँ तो तब ही मन शांत रहता है, लेकिन जैसे ही कथा खत्म होती है तो उसके कुछ समय बाद ही मन फिर से विकारों से घिर जाता है। ऐसा क्यों? पहले जो आनंद हर समय रहता था वो अब सिर्फ कथा तक सीमित रह गया। बड़ा सरल है, आपके पहले और दूसरे प्रश्नों के उत्तर इसी में है। एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, उसका सर जो है पानी के नीचे है, सांस नहीं ले पा रहा, बड़ा दुखी है। जब पानी से सर बाहर आता है और जब वो हवा का सांस लेता है, हवा में सांस लेता है तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर सर अंदर पानी में डाल देता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसी तरीके से जब आप भगवान के बारे में सोचेंगे आप आनंद में रहेंगे, जब आप भगवान के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप निरानंद में रहेंगे। जब भी भगवान ने गीता में कहा सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा चिंतन करो, हर समय, क्योंकि या तो भगवान है या माया है, और जहां भगवान है वहीं आनंद है, जहां भगवान नहीं है वो निरानंद है। तो ये तो बड़ा सरल है। आपने जहां भगवान के वचनों पे, भगवान की कथाओं पे से अपना मन हटाओगे, आप इमीडिएटली उसी तरीके से हो जिस तरीके से आपको पानी में सर वापस डाल दिया जाए। आपको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आप दुखी हो जाओगे। कोई भी व्यक्ति अगर वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत नहीं है और 24 घंटे हर क्षण शरणागत नहीं है तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हर समय भगवान को याद रखने का तरीका ढूंढिए। भगवान ने भगवत गीता में समझाया है कि हर चीज को देखकर तुझे मेरी याद आनी चाहिए। जब भी पानी के स्वाद तक में बात करिए कि मैं पानी का स्वाद हूं, कि पानी पीते हुए भी आपको भगवान कृष्ण की याद आए कि जिसमें जो स्वाद है ये भगवान श्री कृष्ण है। ये ध्यान रखिए। बीमारी का कारण यही है और कोई नहीं है।
भगवान को भूलो, दुखी हो जाओ, अशांत हो जाओ। तीसरा प्रश्न है वृंदावन चंद्र प्रभु जी, अगर मनुष्यों के शरीर के भयानक रोग हो तो क्या भगवान की शरणागत होकर भगवान उस रोग को खत्म कर सकते हैं क्या नहीं? ऐसा कोई उदाहरण हो तो मुझे बताइए जिसमें भगवान ने किसी का शरीर रोग दूर किया हो। कमाल है। हम जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जब उनके शरणागत होते हैं, तो हम उनसे कुछ नहीं मांगते। और सबसे बड़ा रोग तो जन्म मृत्यु का रोग है। जब जब बार बार इस शरीर धारण करोगे, भौतिक भयानक रोग से ही पीड़ित रहोगे। आज हर व्यक्ति भयानक रोग से पीड़ित है। किसी का भी दबा हुआ है, किसी का बाहर निकला हुआ है। हर व्यक्ति टेंशन में है। टेंशन क्या है? दुख है। भगवान से मांगो मत। भगवान दिल करे बचाएंगे, दिल करे मारेंगे, परंतु उनका बचाना और मारना दोनों एक ही बराबर है। बचाया तो भक्ति मिली, मारा तो भक्ति मिली। जब पूतना को मारा तो भक्त बन गई वो, हैं जी। जब अर्जुन को बचाया तो वो भक्त बन गए। तो भगवान के हाथ में छोड़कर भक्ति करिए। भगवान ने बहुतों के रोग दूर किए हैं और बहुतों के नहीं किए हैं, परंतु भक्त के हर रोग को दूर किया है। भयानक रोग, भक्त जब भक्ति करता है तो भयानक रोग भी होता है, तो उसको भक्त ये समझता है कि अरे इससे बहुत बढ़ के आगे होना था, ये तो कम में ही टल गया। वो उसको भयानक नहीं समझता। वो सोचता है कि अरे 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 ये तो बहुत ज्यादा होना था, मैं तो कम में ही काम टल गया भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा से। किंतु आप तो भगवान को अपना वेजिटेबल ऑर्डर सप्लायर समझते हो, ऑर्डर सप्लायर, कि नहीं जी मेरा सब कुछ सही होना चाहिए। तो भगवान तो पहले ही कह रहे हैं तो दुखालय में दुखों का घर है। या तो किसी ना किसी चीज की पीड़ा रहेगी, किसी ना किसी चीज की पीड़ा रहेगी। हम तो ये मांगते हैं कि शरीर की हो जाए पीड़ा, परंतु भगवान तेरे से दूर होने की पीड़ा नहीं हो, क्योंकि वो पीड़ा तो शरीर की पीड़ा से भी ज्यादा गंदी है, क्योंकि वो सारे पीड़ाओं का जड़ है। वो सबसे बड़ा रोग है कि शरीर का रोग हो जाए भगवान, परंतु तेरे को भूलने वाला रोग ना हो। ये ध्यान रखिएगा। और मूर्ख लोग शारीरिक रोगों के पीछे पड़े। अरे भगवान को याद करोगे तो भयानक से भयानक रोग भी, शास्त्र भागवत कहता है कि ये भव सागर है, इसको पार करना, भव सागर मतलब दुखों का सागर है, कठिन नहीं है, नामुमकिन है। परंतु यदि कृष्ण भक्ति करने लगो तो ये भी गाय के खुर नहीं, गाय के बछड़े के खुर के समान हो जाता है। उसको बच्चा भी टाप सकता है। मोहित जी, कृष्ण भक्ति करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।